విమానాలపై అంబాలలో సర్వధర్మ పూజ జరిగింది. అధికారికంగా భారత వైమానిక దళంలోకి ప్రవేశించింది. ఓం గణపతయే నమః. కంఠే యస్య విరాజితేః గరళం గంగా జలే మస్తకం వామాంగే గిరిరాజరాజతనయా జాయా భవా నిస్థితా నంది స్కందిగణాదినాథ సహితం శ్రీ కేదారనాథం ప్రభో కేదారాచలసస్తతోతు సుతతం కుర్వన్ సదా మంగళం. మంగళం భగవాన్ శంభో మంగళం వృషభధ్వజ మంగళం పార్వతీనాథం మంగళాయతనో హరి హరి ఓం. ఓం స్వస్తి స్వస్తి న ఇంద్రో వృధసర్వాః స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తారిక్షో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం పయః పృథివ్యాం పయ ఓషధీషు పయు దివ్యంతరిక్షే పయోదాః పయస్వతి ప్రదిశ సంతు మయం. ఓం విష్ణోరరాటమసి విష్ణో సర్పత్రేషు విష్ణో సూర్యసి విష్ణో ద్రవోషి వైష్ణవమసి విష్ణో త్వాహ. ఓం అగ్నిర్దేవత వాతు దేవత సూర్యో దేవత చంద్రమా దేవత వసౌ దేవత రుద్రాదేవత దిత్యాదేవత మరుతు దేవత. ఓం సుశాంత్రి 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 భవతు. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है. मुझे ये फ़िक्र नहीं कि कौन मेरा दुश्मन है, मुझे ये फ़िक्र नहीं कौन मेरा दुश्मन है. हमेशा जुल्म का पंजा मरोड़ता हूँ मैं, हमेशा जुल्म का पंजा मरोड़ता हूँ मैं. बेमुअजिज़ात दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमुअजिज़ात दुनिया में उभरती नहीं कौमें. जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर नहीं रखता. अल्लाह हम सबको हमारे जमा होने को यहाँ कबूल फरमाए और हमारी हुकूमत ने जो ये ताकत ली है अल्लाह इसको इतना ताकतवर बना दे कि ए अल्लाह दुश्मन के छक्के छुड़ा दे. हमारे जवानों के अंदर शक्ति और ताकत पैदा फरमा दे. हमारे समंदर में चलने वाले जवान, हवा में चलने वाले जवान और खुश्की में चलने वाले जवान, अल्लाह उनको इतनी ताकत दे दे कि उनकी नाम से दुश्मन के छक्के छूट जाएं. और हमारे राफेल हुकूमत ने जो लिया है इसको ऐसा बहाना बना दे कि दुनिया की सारी ताकतें मान लें कि भारत क्या चीज़ है, भारत कितनी बड़ी ताकत है, भारत के अंदर क्या चीज़ है. अल्लाह इस राफेल को हमारे लिए मुबारक फरमा दे. हमारे रक्षा मंत्री को ताकत, हमारे 15 प्रधानमंत्री जी को ताकत, ऐसी इनायत फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को माने, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को माने. मेरी दुआ है, बार बार दुआ है, अल्लाह हमारी ताकत को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे जवानों के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला और उनके साथियों जैसा वाला हौसला अता फरमाए. व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. हम सभी ने दोनों हाथ जोड़कर अरदास करनी है. सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाए. तुद आगे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाऊ न जाने मेरा. तिन्ने ताप निवारण हारा, दुखंता सुखरास ताको विघ्न न को लागे. जाकी प्रभ आगे अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह. श्री भगवती जी सहायवार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय. अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय. श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस डिठियां सब दुख जाए.
तेग बहादुर साहिब सिमरिया करनो ने दया वहताए सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। निमाणिया दे मान सतगुरु निताणिया दे ताण न्योटिया दी ओट सच्चे पातशाह वाहिगुरु। आप सतगुरां ने सैवन विंग दे उत्ते दा तार पातशाह बहुत वड्डी महान बख्शिश की है। रफेल जहाज की रहमत करके सच्चे पातशाह देश नूं दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की बख्शिश करनी। सच्चे पातशाह वायु सेना दे विच चल रहे बहादरां दे शीश ते मेहर दा भरिया हथ रखना। देश नूं सदा चढ़दियां कलां दे अंदर रखना। हर मैदान हर दीवान फतेह ही फतेह बख्शिश करनी। सब दा भला करना। सैवन विंग नूं सदा चढ़दियां कलां देश नूं सदा चढ़दी कला च रखना। सही गुरमुख प्यारे मेल जिन मिले आप दा नाम चित्ते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। We are reading from the Holy Bible, Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried in through the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Shall we pray? Loving Heavenly Father, in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who died on the cross for our sins and rose again on the third day, we are very thankful today for this blessed occasion thou hast granted to us for the induction of these aircrafts to our country. We thank thee and praise thee, Lord, for the way thou art blessing our country. And we specially pray that thou would keep this aircraft safe. We pray for the safety of the pilots. And Lord, we pray for our leaders, especially Honorable President, Prime Minister, Home Minister and Defense Minister. We pray, Lord, that thou would grant them thy heavenly wisdom, that they may be able to take wise decisions so that people may live in peace and it may be for the safety of our country. Lord, we pray that thou would keep us all in peaceful atmosphere. Father, our safety doesn't depend upon the weapons we possess, but the Bible says our safety is in the hands of living God. So Father, we pray that thou would bless our country so that India may prosper and excel. Peace may prevail amongst people, and thus we may live for thy glory. For we ask all these things in the name and for the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen.